तो गाइस देख देते हैं कि हमारा सेमेस्टर 4 का फ़िलासफ़ी का सिलेबस क्या है। बीए ऑनर्स फ़िलासफ़ी का सेमेस्टर 4 का हमारा सिलेबस। तो अगेन वी हैव 3 डिफरेंट डिसिप्लिन्स, जिसमें हमारा सबसे पहला डिसिप्लिन जो है वो है टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी। अब हम इंडियन फ़िलासफ़ी को और डीप में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। इसमें हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं: सब्जेक्ट मैटर और पर्पस ऑफ द टेक्स्ट, that is and then definition of right knowledge and the kind of sources of knowledge, जिसमें हम लोग रेफर करने वाले हैं न्याय बिंदु ऑफ धर्मकीर्ति विद धर्मोत्तरास टीका। तो हम लोग बेसिकली परसेप्शन के बारे में, जैसे कि आपको दिख रहा है कि चैप्टर 1 परसेप्शन, दैट इज़ प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास परसेप्शन एंड नॉलेज, जिसमें हमारे पास डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, डायरेक्ट नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट नॉलेज। तो दिस वाला पार्ट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। यूनिट 1 में जो हम लोग न्याय बिंदु पढ़ेंगे धर्मकीर्ति का, उसी का एक कंटिन्यूएशन इसमें पढ़ेंगे। सो यूनिट 2 इज़ अगेन द सेम थिंग, हम लोग कंटिन्यू टेक्स्ट करेंगे वही वाला। यूनिट 3 में वी हैव definition of inference, what is the criticism by चारवाक and the criticism by बौद्ध, जिसमें हम लोग रेफर करेंगे न्याय मंजरी। Okay, and then unit 4 is we have is types of inference and distinction between शेषवतैपे and सामान्य तो दृष्टतिपे। सो दिस इज़ द टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी, हमारा इंडियन फ़िलासफ़ी का सिलेबस में, जिसे आप देख सकते हैं कि नॉलेज के ऊपर यानी वेज ऑफ नॉलेज के ऊपर, जिससे हम जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज है उसमें हम थोड़ा सा डीप इंसाइट करेंगे। जिसमें से पहला हो गया परसेप्शन एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, और जो दूसरा हो गया वो है इन्फरेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट वी हैव इज टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में जो हमारा यूनिट 1 है, जिसमें हम लोग कांट्स इंट्रोडक्शन एंड इट्स थीम पढ़ेंगे। सो ये जो कांट है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम जो हमने सेमेस्टर 3 में किया है, जिसमें हम लोग प्रायोराई हम प्रोपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। देन वी हैव नीट्स विज अ जर्मन फिलोसोफर, जिनकी क्रिटिसिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हाउ ही क्रिटिसाइज सो मेनी डिफरेंट फिलोसोफर्स, जिनकी हम ऑलरेडी रीडिंग कर चुके हैं सेमेस्टर 3 में। The second unit that we have is the nature of thinking, the nature of thought, thought and the world, and Heidegger's take on the nature of thought. So हम लोग मार्टिन हाइडेगर को पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 is thinking without mirroring, and which is grasping the world, the mind is mirror, knowing without mirroring. These are different topics, very interesting, very different than what we have read before. And then we have is defense of reason. तो हम लोग अब आ गए हैं कि how do we defend the reasoning process, the reason in philosophy, reasons against reason, the stand of reason, everything. So all of this is going to be quite interesting, quite different from what we have read till now. एक modern take है ये वाला पार्ट जो है, this is even more modern than as we have read the last time. And now we have truth, function and logic. So semester 1 में the logic that we have done was the classical account of knowledge of logic, the Aristotelian logic. Now we will be moving forward with the modern logic, जिसे हम symbolic logic भी कहते हैं, because there are a lot of use of symbols in this. So again, this has you can see 4 units, जिसमें कि we have logical connectives and derivation rules and validity invalidity of different arguments, and then categorical propositions, inference, and then proving invalidity and all of that stuff. So this again, logic का जो syllabus है, as you can see, is again quite it is based on symbols. That's why this modern logic is called as symbolic logic. So this is a syllabus of semester 4, जिसके साथ हम शुरुआत करने वाले हैं.